चलिए सो गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर बैक इन द वाइल्ड। और आज हम पहुंच चुके हैं शोकलिया, जो कि राजस्थान में नसीराबाद के पास है। एंड अपेरेंटली मेरे को पता भी नहीं था, ये मेरे दादाजी के घर के बहुत ही ज़्यादा पास है। एंड यहाँ पे हम लोग शूट करने आए हैं लेसर फ्लोरिकन, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। एंड इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल डिस्प्ले ऑफ इट्स कोर्टशिप when it jumps in the air and you're able to catch it. So I'll show you all that in a while. और हम लोग बस अभी खेत की तरफ अगर उधर आप देखें तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, वहीं पे पास में वो दिखेगा। एंड होपफुली वी विल बी एबल टू गेट द पेयर और we'll show its activity. And yeah, it's a different unique bird to see. So let's continue. And a lot of you have asked me about कि क्या क्या equipment मैं carry करता हूँ. So I have my nifty the Z9 along with the 180-600. Very versatile, very unique. Basically आप इससे mammals, birds सब कुछ कर सकते हो. And from thereafter I have my 800 as well. So obviously this I'm carrying specifically to reach far off places. And yes, I do carry my tripod, जो कि मेरा जो legs हैं वो गिज्जो के हैं, and the head is from Manfrotto. It's a fluid head. A lot of people do prefer the gimbal head, but मेरे को वीडियो करना होता है and starting से I have been very comfortable using a fluid head, तो इसलिए मैं ये use करता हूँ. So you'll see all these products being used over and over again मेरे videos में. And for recording at times I do use my mobile phone or I use a GoPro, and maybe in the coming days you'll see something different, a different perspective. So yeah, keep a watch out. So shooting the lesser florican is not easy. You have to understand the movement, because as of now it's in a breeding period, due to which it does a very beautiful display when it jumps in midair and basically flutters its wings. So that's pretty amazing to watch. The good news is कि हमको लेसर फ्लोरिकन काफ़ी अच्छी रेंज पे मिल गया है. It's come closer and we are able to shoot it really well. The display is going on. It's doing its display after every, I would say, 30 to 40 seconds. So that's pretty amazing. You can just hear the clicks going in the background. Or just to know a little bit more about lesser florican, it's actually the smallest of the floricans. And इसको खारमोरनी बोला जाता है. And इनका जो population है that's decreased quite a bit, and that's why it's in the critically endangered list as well. It's around 260-ish that lesser floricans are left. And अभी ये यहाँ पे क्यों मिलता है, lot of people want to know as well, is यहाँ पे जो हमारा मूंग दाल है उसकी खेती रहती है, तो वो खाता है आकर के. And in the mating period is when that's where it does. So in the mating period is where it's basically does this display, courtship display. So yeah, enjoying it, having fun, बहुत मज़ा आ रहा है. So the florican is right in front of us. It's about 200 meters. It's far, but it's sort of moving back and forth. And since I was shooting, I wasn't able to show. But अभी यहाँ से जो female lesser florican है, she just flew from behind us,
and has landed somewhere near to the male, but it's further ahead. तो देखते हैं, maybe she comes closer or he's gonna do the display for even more. And yeah, as soon as I capture it, I'll just show it to you. And here we have Ajay. अजय जो हैं वो हमारे आज के गाइड हैं. ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस ताकि हम लोग एक सेफ़ डिस्टेंस से बर्ड को शूट कर सकें. सो अजय, आप थोड़ा बहुत इस बर्ड के बारे में क्यों नहीं बताते हमको? सर, ये लेसर फ्लोरिकन है. ये इस एरिया में आता है एक मीटिंग पर्पस के अकॉर्डिंग, और ये इस एरिया में मतलब जो अपना अंडा जो होता है वो दे के और बच्चे यहाँ पैदा करके बच्चों को साथ लेके वापस चले जाते हैं. ये अधिकतर जैसे महाराष्ट्र के उधर से आते हैं, साउथ साइड से. और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जैसे ये देखना करना, जैसे ये वॉइस करता है, डांस डिस्प्ले वगैरह होता है इनका, ये चीज़ें हैं. सो भाई, बहुत मज़ा आया. We've taken enough shots of the Florican. ज़्यादा पास जा नहीं सकते, but it's still a good distance to shoot at. धूप बहुत हो गई है. So we're gonna move to another location to see some other birds, क्योंकि यहाँ पे और भी species हैं. But yes, the main objective, which was the lesser Florican, is done.